Hello everyone, I'm back with another chapter. This is chapter 4 of class 6 geography maps. Now इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मैप क्या है, कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है मैप्स के, और हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि मैप में जो डिफरेंट कॉमन चीज़ें हैं जो हर मैप में होती है वो क्या है. Now what exactly is a map? It is basically a representation of drawing of the earth surface या एक छोटे से पार्ट की भी ड्राइंग हो सकती है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू अ स्केल. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन राउंड शेप कंप्लीटली, सो हमने एक फ्लैट शेप में बनाने की कोशिश करी है अर्थ की ज्योग्राफी को. नाउ व्हाई मैप्स आर यूजफुल? One map can show a small area and a few facts. Another map may contain a fact as big as a book. एंड व्हेन बहुत सारे जो मैप्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है तो वी गेट एन एटलस. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. देयर आर different types of maps. Since we want to study them, so let us look at them. Now the first type here is a physical map. It basically shows natural features. ये natural features दिखाता है, जैसे mountain दिखा दिया, plateau दिखा दिया, plain दिखा दिया. It exactly shows कि river कहाँ पर है, ocean कहाँ पे है. तो ये basically physical relief दिखाता है, तो इनको relief maps भी बोलते हैं या physical map. Another one is political map. This shows political boundaries of different countries, different states. So it also shows boundaries of cities, towns, villages and different countries का भी. उसके बाद the third type is a thematic map. और ना thematic map they focus on a specific information. जैसे road पे focus, rainfall maps हो सकते हैं. मैप they can show distribution of forest, industries. इन सब maps को हम बोलते हैं thematic maps. Now उसके बाद जो important aspect है इस chapter का, that is the components of maps. तो ये तीन तरह के components हैं. One is distance, directions and symbol. These components are very important. Now coming to the distance, मैप बहुत बड़े एरिया को एक छोटे पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, बट ये रिप्रेजेंटेशन तभी सही है जब ये डिस्टेंस रियल हो. नाउ इट इज ओनली पॉसिबल when a small distance on paper it represents a large distance on ground. तो उस पर्पस के लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं. What is a scale now? The scale is the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map. Now this can be understood with the help of this example कि अगर आप के स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैप में 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो कि उस मैप पर है वो 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है. तो इसकी मदद से आप कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. If you know the scale of a map, you can calculate the distance between any two places on the map. Now there are two types of maps on scale: a small scale map and large scale map. So it has to be remembered that when a large areas like continents, countries are to be shown on paper, then we will use small scale map. जब छोटा एरिया दिखाना है मैप में, when you want to show a smaller area like your village, town, then you use a large scale map. Now apart from these two basic differences, the other difference is large scale maps, they give more information than the small scale. Now when you look at the map, all the map contains an arrow with the letter N at the upper राइट हैंड कॉर्नर. तो इस एरो का मतलब होता है कि टू रिप्रेजेंट नॉर्थ डायरेक्शन. अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कौन सी डायरेक्शन इसके बाद है. नाउ व्हेन यू नो द नॉर्थ यू विल नो दिस वेयर इज साउथ एंड वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट. दीज फोर बेसिक डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. To find the direction, we can also use an instrument called compass. Now, compass is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always point on the direction towards north and south. Now, the third most important aspect is the symbols. It is not possible to draw on map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railways or a well. तो इन सब को मैप में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम सर्टन लेटर्स, शेड्स, कलर्स और पिक्चर्स यूज करते हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक छोटे से स्पेस में. नाउ अगर आपको किसी प्लेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है और आप वहाँ की लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड नहीं करते हो, यू कैन इजीली कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स एंड दीज सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स. हियर आर सम सिंबल्स लाइक फर्स्ट एग्जांपल रेलवे लाइन को किस तरह से किया है रिप्रेजेंट. रोड्स का आप देख सकते हैं मेटल्ड है या अनमेटल्ड है.
उसके बाद बाउंड्रीज इसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ना, दिस पोर्शन हियर इज इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज अ स्टेट बाउंड्री, द अदर वन इफ यू वांट टू सी टेम्पल किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज एंड ग्रासेस, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स। नाउ दीज सिंबल्स ऑन अ मैप यू कैन इजीली फाइंड, और ये हर मैप में सेम होंगे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री है या स्टेट बाउंड्री है, वेल है, टैंक है, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, यू कैन इजीली फाइंड ऑल ऑफ देम with the help of these symbols. Let us move further. What is a sketch? Sketch is mainly based on memory and spot observation of a particular place. It should not be scaled. It only represents a rough drawing of an area which tells where a particular place is located with respect to other places. Now what is a plan? Now plan is a drawing of a small area on a large scale. कभी कभी हमें किसी एरिया के या पर्टिकुलर बिल्डिंग की बहुत डिटेल में जानना होता है measurements, like you want to know the length and the breadth of a room which cannot be shown on a map. Now at that time we can prefer drawings drawn to scale which are known as the plan.